ये मेरी कौन सी फोटो कहाँ से छपी? Is it live? हे बच्चा पार्टी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो? जान और पहचान सकते हो तो थम्स अप दो। ओह हाय। सो हेलो एवरीवन, आज वेलकम टू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। और आज मेरे साथ है निधि मैम प्लीज़ वेलकम। और इसके बाद की कन्वर्सेशन निधि मैम स्टार्ट करेंगे। Hello everyone, good afternoon, how are you all? Hope we are visible and audible. Hi everyone. Yes. So बच्चे आपको जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं रोहित सर, right? मुझे लगा मैम भूल गए होंगे, बहुत मतलब अरसे बाद हम लाइव हुए हैं आज जाकर के। ओके, एसवी नहीं दिख रहा सर, एसवी की शक्ल भी दिखा दो इनको। बिल्कुल मेन जो हमारा गेस्ट है। So I hope we are audible, guys. Are we like clearly audible and visible? अभी बहुत दिनों बाद आपने रोहित सर को देखा है। आपको भी शायद नहीं, थोड़े नहीं बीच में। हाय एवरीवन। सो सिद्धार्थ वल्सन से हाय टू एवरीवन आल्सो। सिद्धार्थ वॉइस इज नॉट कमिंग ना। थोड़े नहीं बीच में ये तो वाइट है। हाय एवरीवन। सो सिद्धार्थ वल्सन से हाय टू एवरीवन आल्सो। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, अगर आपने YouTube चलाया तो बेटा बंद कर दो। ओके, रिपीट हो रहा है जो भी। वेट, वी आर हियर एंड टिल द टाइम वी आर मेकिंग द थिंग्स टेक्निकली ऑल वेल। सो वी वेलकम अभय सर। बिल्कुल अभय सर भी आज हमारे साथ रहेंगे NSCGS के सेशन में। मेन जो थे अभय सर ही थे, ठीक है। सो वेलकम अभय सर। हाय बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग भाई? आई होप यू ऑल वेल, डूइंग फाइन, हेल्दी। होली मनाई अच्छी तरह, रोहित सर ने बहुत अच्छी तरह होली मनाई है। अभय सर के लिए दिल भेज दो पहले तो। रंग-बिरंगे कलरफुल। हाँ, अभय सर भी वो होली मनाना चाहते थे पर सामाजिक ने रोक रखा था। So first of all, भाई सिद्धार्थ, congratulations बच्चे, very well done and you've बहुत सही स्कोर था तुम्हारा NSCGS का, and not only NSCGS but IOQM में you've performed wonderfully well। मुझे पता था अभी सर आएगा ही आएगा। तो तुमने IOQM के अंदर भी सर्टिफिकेट लिया अपनी स्टेट से, so well done, very well done। This is for NSCGS, right? हाँ, ये NSCGS के लिए है बच्चों, and NSCGS में मतलब it has been awesome result by Vedantu and मैम 16 out of 310 selections. That is a superb ratio, and that too in the first year. And Sidharth was one of our regular students and who attended this classes. And uska I think attendance percentage में 90% से ऊपर था. And superb Sidharth. तो कैसा रहा तुम्हारा experience, मैम? आप पूछना चाहेंगे? So first of all, welcome Sidharth and congratulations from all of us, Vedantu Olympiad School and Vedantu. सबसे पहले तो सिद्धार्थ, जितने बच्चे तुम्हें जानते हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, बट जो नहीं जानते हैं who might be watching this और बाद में देखेंगे वीडियो, तो प्लीज जल्दी से अपनी क्विक सी प्यारी सी इंट्रोडक्शन दे दो। कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो? My name is Sidharth Valsan. I'm from Kochi, Kerala, and I'm from grade 9 going to 10 this year. And I qualify IOQM. ओके, सो भाई ये है हमारा SV हैशटैग सिद्धार्थ वल्सन। सो जैसा कि आपको पता है, ही क्वालिफाइड IOQGS का पार्ट 1 NSCGS वाला जो पार्ट है, एंड पार्ट 2 का भी रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड। सो पार्ट 1 इसने क्वालिफाई किया है, एंड यू ऑल नो जूनियर साइंस ओलंपियाड इज अ काइंड ऑफ एग्जाम विच इज वेरी प्रेस्टिजियस, इंटरनेशनली एक्लेम्ड, एंड अक्रॉस इंडिया 310 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं स्टेज 2 के लिए। सो उनमें सिद्धार्थ वल्सन इज वन ऑफ देम, राइट? एंड यू नो कि 2006 और 7 वाले बच्चे कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम इन लाइक दिस IOQGS 2021 दैट वाज ऑन 17th of January, एंड उन 310 बच्चों में आना इज
a big achievement, right? And बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे पिछले काफी months से to prepare for this exam. So whatever your result was doesn't matter, but इस जर्नी में, इस एग्जाम की प्रिपरेशन में सब बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो तुम्हारी लर्निंग रही है, आपका NSCGS क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, दैट इज द सेकेंडरी थिंग. द प्राइमरी फोकस इज टू मेक यू fall in love with actual science and maths. All the courses that we run here to evolve you all scientifically, aptitude आपका evolve हो, और आपको exactly पता चले कि beyond जो आपकी टेक्स्ट बुक है या स्कूल करिकुलम है, उससे ज़्यादा आप क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, राइट? सो आज का सेशन है हमारा बातचीत का सेशन, जो हम करने वाले हैं सिद्धार्थ वल्सन के साथ. और रोहित सर, आपको पता ही है, हमारे एवर लविंग रोहित सर मस्त मस्त क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, राइट? और आज वल्सन से भी पूछेंगे ऑफ कोर्स. सो सिद्धार्थ वल्सन NSCGS क्वालिफायर, IOQGS का पार्ट 1 जो NSCGS था उसका क्वालिफायर. वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद सिद्धार्थ वल्सन. एंड येस, अभी हम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे, कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के वो पूछेंगे. बट येस, ऑफ कोर्स आफ्टरवर्ड्स आप लोगों से भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे जो आप पूछना चाहते हो सिद्धार्थ से रिगार्डिंग द प्रिपरेशन या एनीथिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक, राइट? येस, ऑफ कोर्स, होपिंग द डिसेंसी इन द क्वेश्चंस. बिल्कुल बिल्कुल, राइट? ओके, सो देखो डिसेंसी पे जो बिल्कुल बिल्कुल रोहित सर ने किया ना, दैट वाज माइंड ब्लोइंग. रोहित सर, तो सिद्धार्थ, सबसे पहला क्वेश्चन, तो आपको कैसा लग रहा है फिर NSCGS का फर्स्ट राउंड क्लियर करके? तो ये तो बनता है ये तो बनता है अचीवमेंट के बाद जो exactly Valsan, after clearing this exam, which is a very prestigious one. Honestly, the first and like just after writing the exam, I honestly felt like I did better in IOQM and VOS and IOQJS, especially because of chemistry, to be honest. Because I got really demotivated for paper 2 because of the one's chemistry, and then when the results came, it became quite the opposite. I did better in IOQJS than IOQM, and that moment of time I was really happy. But then the problem is I am mostly a pessimistic kind of person. Yeah. So people come to here and stuff and all. But then the students began to get tense regarding the second stage. Anyways, just when the result came, I was ecstatic because I was really happy. I was able to do something I was not able to do before, and also I was able to score double the marks I earned last year without much preparation. But then I'm glad I was able to do it. And yes, I'm thankful to all my friends and family and everyone who supported. So the point is, जो अभी सिद्धार्थ वल्सन ने कहा, he could perform better as compared to last year. Last year also he appeared for this NSCGS exam, but इस बार qualify भी हुआ and he scored better, more marks, rather double marks he was saying कि he scored this time. So point is, जो सबसे अच्छी बात है ना, last year he gave but he was not demotivated at all. इसने वापस से try किया to give this exam this year with a better preparation, with a more dedication and focus. So this is a big learning for all the aspirants. हो सकता है बच्चों आपका इस बार एग्जाम क्वालिफाई ना हुआ हो, या IOQGS ना हुआ हो, या IOQM ना हुआ हो, राइट? बट देयर आर मेनी अदर एग्जाम जिस पे आपको फोकस रहना है और पॉजिटिवली डेडिकेटेडली एक्ट करना है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्वालिफाई. जैसे इसने बोला है, दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट इज द बेस्ट लर्निंग, आई विल से, राइट? एक बच्चे का डाउट आ रहा है IIM and JEE 2023 नहीं, ओवर पावर्ड गाय, ये ओवर पावर्ड गाय बहुत ओवर पावर्ड रहता है हर सेशन में. सो ही इज आस्किंग, रोहित सर क्या पढ़ाते हैं? रोहित सर क्या पढ़ाते हो? जिंदगी पढ़ाते. अबे सर कह रहे हैं कि हम जिंदगी पढ़ाते हैं. फिजिक्स गाइस, फिजिक्स कोशिश करते हैं पढ़ाने की. अच्छा सिद्धार्थ, एक और क्वेश्चन. लास्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ, इस साल क्लियर हुआ, ऐसा क्यों? क्या चेंज आया तुम्हारी लाइफ में ऐसा? रोहित सर आए इसके Actually, I focus more on Math Olympiad, and I actually registered for IOQM and NSCGS on the last day and all. And then I wasn't able to prepare much anyways. But I solved the previous papers, but I feel like without studying the theory, just solving the papers is not that fruitful. But then actually the lockdown was one period of time in my life where I learned the most. I was able to learn the most in my life. So I feel like I was able to attend so many sessions, and I was able to at least cover the theory before going to solving the previous questions and all. So then getting that foundation really helped me to increase my marks.
और वेदांतु ने कैसे हेल्प किया, मतलब यू ज्वाइंड वेदांतु, राइट? So when did you join वेदांतु? कब हमारे कोर्सेज का वेदांतु की कुछ जर्नी बताओ। आप रेगुलर ही रहे हो जितना मुझे याद है, जैसे हमने बैचेस लॉन्च किए थे, ऑल्दो वी लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? VOS पूरा डेब्यू ईयर था हमारा, एग्जैक्टली एंड ये शुरू से ही हमारे, और आपने हमारे डेब्यू के अंदर सेंचुरी मारी है, राइट? तो बनता तो है कि आप बताइए कि वेदांतु कैसा लगा, एक्चुअल में हेल्प किया कि नहीं किया ना, नो शुगर कोटिंग, मतलब यू हैव टू बी ब्लंट एंड क्लियर। अगर तुम वेदांतु ने तुम्हारा नुकसान किया वो भी बताना, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? तो जो भी तुम्हारे दिल की बात है वो हमें चाहिए, नो शुगर कोटिंग, राइट? राइट, और जो बाकी बच्चे हैं उनको भी एक क्लियर पिक्चर मिले, राइट? यस, सो बिकॉज आपको भी पता है सिद्धार्थ और बाकी बच्चों को भी पता है तो कि भाई इट इज नॉट अबाउट पब्लिसिटी। हमारी ऑडियंस पैसे देके बुलाने वाली नहीं है, ठीक है? वो Exactly. दिल से आती है, ना बैच की, हाँ, ना बैच की और ना ही वैसे, ठीक है? तो हमने पैसे देके कोई नहीं बुलाया, ठीक है? राइट, तो लेट्स बी ऑनेस्ट और इसका ऑनेस्ट फीडबैक लेते हैं, राइट? सो दैट जो भी बच्चे एस्पायर कर रहे हैं या चाहते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ आवर बैचेस, टू बी अ पार्ट ऑफ VOS, तो उनको कुछ फायदा होगा भी नहीं। लेट्स हियर फ्रॉम हिम ओनली, इसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एंड इट्स नॉट दैट कि आपको लगेगा कि भाई सिद्धार्थ वल्सन ने तो क्वालिफाई कर लिया है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग हिम अप, सो ही विल से ऑल द गुड थिंग्स बिकॉज ही हैज क्वालिफाइड। सो बच्चों आपको पता होगा, आई हैव ट्राइड अर्नव गर्ग इज अ स्टूडेंट, वो आज अवेलेबल नहीं था। He is a brilliant student and he'll qualify all the future exam, I'm sure, but he could not be the part of today's session because of his engagement, right? Yes, engagement की वजह से आज नहीं आ पाए. It is not just that we are glamorizing student who qualified, it is just that we are appreciating the efforts of every student जो भी हमारे contact में है ना, everyone, whether you crack it or not, we want you to be a part of our sessions in this pep talk. Pep talk is not about just who qualified in CGS, it is about all those students who really prepared for that exam, right? देखो भाई, हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर है। हमारे पास जो भी बच्चा पढ़ता है ना, हमारे लिए वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। सीधी सी बात है, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, किसी ने क्वालिफाई किया। हमारे लिए सभी बच्चों ने क्वालिफाई किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन करना और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना। जिस दिन एग्जाम होता है, कभी कभार बच्चा उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाता है, रीजन बीइंग कभी कभार वो उसका दिन नहीं होता है, जस्ट उस दिन नहीं होता है, बस नहीं होना होता है, ठीक है? तो पर उसका मतलब ये नहीं है कि भी आने वाले जो एग्जाम है उसके अंदर वो अच्छा नहीं करेगा, डेफिनेटली वहां पे वो अच्छा करेगा। तो चलिए सिद्धार्थ से हम पूछते हैं कि उसको कैसा लगा वेदांतु में, ठीक है? कब उसने ज्वाइन किया था, कितनी क्लासेस वो मिस करता था, ठीक है? अगर वो मिस करता तो कैसे कॉप अप करता था, तो सब कुछ आपने, हाँ, टेस्ट कितने देता था, ठीक है? और सिद्धार्थ वल्सन फॉर द प्रिपरेशन, जैसा आपने कहा कि कोविड एरा वाज अ टाइम जब आपने सबसे ज्यादा लर्निंगली नॉलेज अपनी को एनहांस किया, राइट? एंड यू आर रेगुलर इन आवर बैचेस, लाइक जब से लॉन्च हुए थे। सो जस्ट गिव इट insight about your journey that you had on VOS with the system, with the teachers, exactly everywhere. We are here on YouTube, we are there in live classes, तो सब कुछ। So to begin with my story with Vedantu, like my very first encounter with Vedantu itself was last year for INMO batch by Aspirants. I really liked the course, but then after the examination, I eventually forgot about Vedantu. And one fine day, like last February or something, I decided to Google free online competitive exam, and that's how I got hold. And then I just wrote it as like a leisure time at that moment, but then I never even knew about the prices, to be honest. Okay. And then one day when they called me, telling that I got enrolled into these courses and all, I thought that it's a fun way to pass my time anyways, since the COVID lockdown and we were coming anyways. So then I decided to enroll, and I was able to meet a lot of wonderful people. And they were my motivation to actually continue with this school, because seeing others struggle to manage both schoolwork and this and all, or eventually motivates us as well to do how they were doing. And then I feel like Kerala is a state where there's not much Olympiad preparation as such. Most schools and people are focused on boards and exams and like that. But then so having online resources is something very useful for people from my area and all. So then I think Vedantu helped me in getting a good foundation for NSCS preparation anyways. Okay, और मतलब आजकल सबसे बड़ा जो इशू है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, वो ट्रस्ट का इशू है, राइट? कि हमें पहली बात तो फ्री में चीज़ मिल रही है, तो हमें लगता है कि वो फ्री में क्यों मिल रही है, शायद कुछ गड़बड़ होगा। तो आपको वेदांतु में कैसे ट्रस्ट हुआ, वेदांतु पे, कि हाँ यार ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने में?
कैसे लगा आपको कि यस मतलब कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ और इनकी हेल्प से मैं कर सकता हूँ? क्योंकि मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि शायद मैं अगर बच्चा होता तो शायद मुझे एक इशू आता कि यार ये फ्री में मिल रहा है. See, तो even like there is a पहला जो most of us have a tendency ना to think negative about anything, right? पहला की वो doubt आ जाता है पहले question mark. Even if we are taking your interview today ना, there might be so many students across the platform जो देख रहे होंगे जिनको लगेगा कि भाई इन्होंने नहीं पढ़ाया होगा, ये पार्ट नहीं दिया होगा, है ना, तो मतलब ऐसे ही बुला लिया. So वो एक जो doubt वाला angle है, that is always there. राइट वो कि मतलब ये तो गलत ही है, ये तो फर्जी है, सो कॉल्ड, राइट. सो वो होगा. तो हाउ डू यू मतलब है ना had that believe on Vedantu or Vedantu Olympiad School ki yes we can help you out to crack this prestigious exam, right? It's not just another exam, it is a big exam, I'll say, right? और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो I'll say this is the best exam जो 8th और 9th का बच्चा can target अगर वो चाहता है साइंस में फ्यूचर अपना, और +1 में भी वो हेल्प करते हैं. एग्जैक्टली. हाँ जी सिद्धार्थ. Yes. I like to be honest, like everyone will have that thought whether it's like a scam or and something. It's free actually. Like so, but my opinion is that even if it's free or not, if you get an opportunity, you should always and you should never refuse a chance to do something. And no matter what happens, you should at least try it out before deciding whether you want it or not. So then when I attended the sessions and I met many people from a batch, I felt like it's a good way to continue anyway since we don't have offline schools. So then I felt like I'll be able to manage time properly and it'll be good for my education as well. So then having experience like the teachers and all, and having teachers who explained it very well in the first classes, so I felt really motivated to continue. सो सिद्धार्थ जो आपने ना एक प्रीवियस क्वेश्चन में जवाब दिया और विच आई नो यू वेरी वेल ऑल्सो कि आपको जो बहुत एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ लगी हेयर, वो जो आपका बहुत बड़ा बाइंडिंग फैक्टर भी रही अदर देन द अदर फैक्टर्स, राइट, दैट इज द ग्रुप दैट यू हैड, राइट, द फ्रेंड्स दोज यू मेक हेयर. Like I'll say they are kind of a friends for lifetime sort of what I feel from the group that you all have, right? The bonding that you all have, इतना ज़्यादा मतलब एक दूसरे से interact करना and positively एक दूसरे को betterment के लिए act करना और motivate करना. So many of you like you all together took पार्ट इन सो मेनी अदर एग्जाम जो हमें शायद पता भी नहीं है ना, लाइक उसमें आपने वही जो VOS का ग्रुप था उसके साथ पार्टिसिपेट किया एंड यू ऑल आर डूइंग फैंटाबुलसली वेल इन वेरियस अदर एग्जाम्स ऑल्सो, राइट. सो दैट इज द बेस्ट थिंग आई विल से बिकॉज VOS में जो बच्चे हैं दे आर सिलेक्टेड मोटिवेटेड जिनको ओलंपियाड के लिए तैयारी करनी है, और उन बच्चों के साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी और जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी या ग्रूमिंग होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम वो अपने आप में बहुत अच्छी होगी. ऑफ कोर्स अगर इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ बैच जहां पर 10-15 और मोटिवेटेड बच्चे हैं जिनको और बहुत कुछ पता है अबाउट वेरियस एग्जाम, श्योरली आई विल आल्सो गेट टू नो अबाउट ऑल दोज एग्जाम, श्योरली आई विल आल्सो गेट टू नो ऑल द रिसोर्सेज दैट आई कैन यूज टू एग्जैक्टली मतलब एकदम खतरनाक भयंकर सा proverb statement from our श्री रोहित जी महाराज. So yes सिद्धार्थ वल्सन, तो वो सारे तुम्हारे दोस्त यहाँ भी हैं, they are a constant source of motivation I am sure for you and of course the rest of the people. You are very motivating for each other, right, empowering each other, right. अभी भी OP लिख रहे होंगे I am sure. Yes, तो please say some good words, some words, whatever you feel like for them, right? Because they also played a major role in your, in your preparation, in your this qualification of NSCGS, right? अरे कौन से बच्चे हिस्सा बनना चाहते हैं इसका, तो आपको भी निमंत्रण दिया जाएगा to be a part of this pep talk. Just drop us a mail and you'll be a part of this. Don't try to forcefully enter the. How they're getting the meeting link? No, ऊपर से स्मार्ट पीपल द टेक्नोलॉजी पीपल सर, हम मतलब बूढ़े हो चुके हैं. They know all the hacks. Yes Siddharth. Immediately when the course started, we actually made a group just to chit chat and talk about the sessions and just talk about other stuff in general. And then I felt like that was a good bonding experience. And honestly, my friends is one of the batchmates and the friends I met along the way are one of the key reasons why I was able to study till the very end. Because
because even when we had troubled times, we could just talk with one another and we'll feel better. And then we could also help others in their preparation, and we can just share materials. And actually, Telegram is a huge source of material, and then we could share material with each other so that we can study together. And then we could have quizzes, and that was all really fun because that pushes us to work forward. Seeing others work allows us to be motivated by them, and helps us to move forward along with them. Our entire friend group is our friends which I'll never forget in my life. And then later, even Nidhi ma'am created her own group with the students who were most active in the class and the tests. And there also we used to discuss questions and talk about stuff and all that is at times they keep on discussing the stuff till 2 or 3 in the late night, and I have to say, bhai so jao, pad lo ya so jao. I every time near there this sir IOQM NSCGS exam, ye matlab ekdam full on, they are interacting. Sometimes for discussing questions, sometimes some random stuff they are discussing, right, till 2 or 3 in the night. So I literally scolded them कि भाई paper है, so जाओ पढ़ लो या तो revise कर लो. Just leave that your chit chat among yourself and focus on your studies and revise the things, right? Many times it happened. So the point is, we could provide them a platform जहाँ एक दूसरे से interact कर पाए, है ना? ये मतलब it is the best thing. I'm not saying कि we taught them so fantabulously well chemistry, physics, maths or biology. It is just that we gave them a platform with equally, motivated students. अगर एक प्लान ने ग्रो करना है तो you just have to give the conducive environment. Exactly. And this is what we did. ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट होगा ना तो बच्चा अपने आप उस एग्जाम को क्लियर कर जाएगा. बिल्कुल. ठीक है, तो और भी बच्चों क्लियर किए जिनका नहीं भी हुआ. ऐसा नहीं है कि वो मतलब या नालायक थे या कुछ ऐसा था. कुछ भी नहीं, just a matter of day. Just a matter of day. And no exam can tag any child, sir. Exactly. Right? Sidharth Valsan could qualified. Who did not qualify in this is I feel like they are the role models. Even before the exam, I used to try to be like them, seeing them prepare every single minute. That my goal was to be like them. Okay. So, nice. Of course, this is the motivation. This is the positive motivation and positive competition, I will say, right? Yeah. जो आपको betterment की तरफ move करता है. बहुत सारे बच्चे qualify भी नहीं हुए, but we celebrate not just the result जिन्होंने qualify किया. We celebrate each and every student जो इस कोर्स का पार्ट था, इस एग्जाम को टारगेट किया जिसने, राइट, जिसकी तैयारी की. तो इट इज अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who targeted, who aspired to qualify, who prepared for Junior Science Olympiad, right? So this is a celebration. So we'll be coming up many more students who could not qualify. Maybe they will give you a better insight कि किस वजह से they could not qualify, क्या positive, क्या negative. So we'll be having students, not just the qualifiers, every student, because every student has a story to tell. Exactly. Right? तो सिद्धार्थ वल्सन, आप मुझे ये बताओ, आपने ना मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग बताई थी, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम, की क्या लर्निंग थी, क्या तो करना चाहिए, क्या तो नहीं. एडवाइस टू स्टूडेंट जो भी एस्पायर कर रहे हैं जूनियर साइंस ओलंपियाड को इस साल, राइट. और एक सुनैना आपसे, सुमाल्या इज आस्किंग फॉर बुक्स, सो आई टेक द स्टूडेंट्स क्वेरीज ऑल्सो, लेटर ऑन विल टेक दोज क्वेरीज. सो सिद्धार्थ, बस अब मुझे ये बताओ कि डूज एंड डोंट्स फॉर दिस एग्जाम, और जो आपको धोखा मिला केमिस्ट्री से उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें. Right, because you all were very equally, because paper was that tough. इस बार केमिस्ट्री का बहुत रैंडम एंड क्वेश्चंस भी गलत थे, उसके कारण जो है सिलेक्शन, हाँ, क्वेश्चंस भी गलत थे. तो एक किस तरह से अगर ऐसा कोई पेपर आ जाए या ऐसा कोई सब्जेक्ट आ जाए जिसमें आप वेरी कॉन्फिडेंट हो, आपने टाइम स्पेंड किया, बट वो पेपर ऐसा आ गया, तो हाउ टू मैनेज, है ना, दैट इज अ बिग लर्निंग, आई विल से, राइट. जिन्होंने तो वो मैनेज कर लिया सर, क्योंकि 2 क्वेश्चंस गलत भी थे आउट ऑफ 8, 2 या आइल से 3-4 मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो वो गलत, तो बार-बार रिपीट करोगे, चेक करोगे, फिर तुम्हारा जो मोटिवेशन एग्जैक्टली है कि मैंने तो इतनी प्रिपरेशन की थी, हाँ, इस सब्जेक्ट को तो करना ही करना था अटेम्प्ट. क्यों शॉक से कैसे बचे आप? यस, प्लीज, लर्निंग्स फ्रॉम NSCGS दिस ईयर एंड डूज एंड डोंट्स. वल्सन. यस, my very first point to tell is that never neglect biology. Most of the people. So please, पहला point, hashtag never neglect biology for Junior Science Olympiad preparation. सबसे कोट किया जाए. Awesome point, very good point. Yes, Valsan. Next. Most of the people who are preparing for IOQM are those who are preparing for IOQM. Most people are non-medical people, so then they usually prepare physics, chemistry, and mathematics and don't care much of biology. Yeah. Initially, even I was actually the same way. I used to
listen to sessions, and then they rarely used to write notes. I didn't usually care about biology. I just thought whatever sticks in my mind, I can use that to get something in biology. But then by the time the exam came, to be honest, most of the lengthy one, it was a bit lengthy, especially since there were many mistakes where we could waste our time. And biology is that one subject where we could, biology and chemistry are the two subjects where we can easily get marks. We don't have to waste much time. For example, biology are direct theory, so we don't waste time there. So, but then we don't prepare much for biology, so then that becomes hard because it's like easy marks. So then people don't usually care. So what I say is that we should always constantly keep on making notes for each subject at the time we learn it itself, because that will really help us by the end of our preparation. So the next point, जो second point बोला, एक मिनट, second point जो इसने बोला, first point की never neglect, ignore biology for just JSO, and second point, please make proper regular notes so that end time पे you can revise all those notes, right? अपने खुद hand written notes होंगे, और जैसे इसने बोला मोस्टली बच्चे सोचते हैं हम इंजीनियर बनेंगे सर, जेई करेंगे, तो बायोलॉजी में वो इंटरेस्ट नहीं निग्लेक्ट कर देते हैं, बट बायोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. एंड यस, अब आप सोचोगे मैम अभी इतनी बायोलॉजी पढ़ने का क्या पॉइंट है, अगर हमने जेई करना है तो वो फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा? केवीपीवाई, यस, केपीवाई इज द एग्जाम दैट स्कॉलरशिप एग्जाम, बहुत ही आपको पता है इंडिया में प्रेस्टिजियस एग्जाम है, स्कॉलरशिप एग्जाम है, राइट? सब बच्चे एस्पायर करते हैं, टारगेट करते हैं 11th एंड 12th, राइट? सो वो केवीपीवाई एग्जाम में भी बायो आती है, इवन इफ यू आर अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट. 11th में जब आप केवीपीवाई में अपीयर होगे तो बायोलॉजी विल बी देयर, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लर्निंग डूज एंड डोंट्स. The next learning is actually like really important. That's one of the reasons why most people in our batch could not qualify. That is time management. To be honest, like most of us, like since it was a 1-hour paper this time, most of us like prepared to finish by 55 minutes or something and just revise for 5 minutes. It's usually something like that. And then most of us actually plan to start with chemistry, then do biology, then do physics, then do maths in order of increasing time, like increasing of like how much time it will take. So then, but the problem is when the exam came, chemistry was exceptionally hard and like the questions were wrong. So then we would waste a lot of time there. But then we should never forget to go through the paper when you are writing the exam, because what happens is that most people did not, and they just started with the plan they had made before the exam. But I just went through the paper as to words like ozone and all chemistry, and I decided to leave it to the end. I decided to do biology, then physics, then maths, and then chemistry. I think that was a good decision I did at that moment, and most people like wasted time where thus they could not finish properly the entire paper, and that also demotivated for the second paper. So the time management is very important during preparation as well as during the exam. ओके, गुड गुड. सो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी सब्जेक्ट आपको धोखा दे सकता है, जितना मर्जी आपने उसकी प्रिपरेशन की हो, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सिनेरियोज जहाँ कोई एक सब्जेक्ट, जैसा कि इस बार केमिस्ट्री ने दिया, राइट? Most of the students were super confident in chemistry. Like many students were there, like जो बहुत ज़्यादा confident थे chemistry के अंदर, but क्योंकि questions wrong आ गए तो उनका time बहुत waste हो गया. तो time management और दिल नहीं लगाना किसी question से, that is most important. कि भाई ये तो हमने किया ही किया सवाल है, तो ऐसा तो किया है, अपनी ego पे नहीं लेना किसी question को, I will say. So these are the learnings from this year's NSCGS, and obviously हर पेपर के बाद हर नई learning है. ऐसा नहीं है कि इस बार chemistry में marks कम आए या नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम इट माइट बी सम अदर सब्जेक्ट, राइट? सो यू शुड टेक द लर्निंग्स और आपको और पॉजिटिवली और इफेक्टिवली उनको ओवरकम करते हुए तैयारी करनी है एग्जाम की, राइट? नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल, राइट? आप लोगों से क्वेश्चन कुछ, एक तो बुक्स का, somebody is asking Valsan about books. What are the books? Specifically bio भी पूछा था, so what are the books that you should focus on to qualify this exam NSCGS? Yes, to be honest, I've not done all these books completely, but I'll tell which is the best structure to go on for these. So our first priority should be to cover NCERT. NCERT is like the foundation for preparation. So then 8th, 9th, 10th, 11th, the NCERTs should be covered before going to other books. Once we cover 8, 9, 10, 11 NCERT, then we can go to like books like Pearson, and then we like Pearson and such guides for like mostly till 10th grade,
And then there are like really OP books, like for physics is NCV and chemistry it's ISI Mukherjee, and for maths there are a whole bunch of books like Chandra Thriller, Pre-College Mathematics and all. And for biology it's Campbell, but Campbell is like a really high level that is mostly of INJ, so that type. So then I would suggest Campbell to do Campbell after finishing or being thorough with the theory for biology. And then you can also do, we should always do the previous year questions of NSCJS. And if you're feeling confident enough, even the NSCB, NSCC, some questions, like easy ones. और वेदांतु के स्टडी मटेरियल ने कुछ हेल्प किया क्या सिद्धार्थ? Yes, we should always have some sort of like assignment sheets or something. Right? Vedantu provided assignment sheets for every chapter. So then that we should always make sure to practice after every session. I cannot do it completely, to be honest, but then that is the ideal way to do it. So then we should always make sure that our theory is like we have done a theory well enough to solve questions for that topic every day. Okay, so books में he shared that NCERT is must for 8th, 9th, 10th and 11th की NCERT. Very, very important to cover all the NCERTs of 8th, 9th and 10th की science की NCERTs, right? And also previous year questions of NSCGS you should also do, जो करने ही चाहिए, बट या एंड मोमेंट पे विल से है ना कि जब एग्जाम से एक मंथ पहले यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग, ताकि आपको ये भी पता चले आपकी वीकनेस क्या है. एंड स्टडी मटेरियल दैट वी प्रोवाइड. एंड अदर देन ऑल्सो जितना मुझे याद है, रोहित सर ने जब बच्चों ने एक सर्टेन लेवल अटेंड कर लिया था, यू स्टार्टेड विद द HCV डिस्कशन ऑल्सो, HCV डिस्कशन, एंड आई गेव देम सम टारगेट्स फ्रॉम RCM ऑल्सो, RC मुखर्जी के टारगेट दिए, राइट. सो दीज आर द बुक्स जो कि आपको और प्रिपेयर करती हैं for this NSCGS exam. But having said that, beta, let me tell you one important aspect. There is no book in the market which is specifically for junior science Olympiad, right? Exactly. So if you ask ना कि कोई किताब बता दो जो junior science Olympiad की तैयारी करा दे, कि there is no such existing book. The books जो हम बात भी कर रहे हैं ना, they are for JEE preparation, जो हम उसका कुछ portion उठा के which is more relevant to you know this junior science. बहुत बड़ा है मैम NSCGS का, उसके अंदर +1 +2 लेवल तक का टच किया जाता है. Exactly. डेप्थ में नहीं, बट बेसिक आपको कवरेज बहुत है. इसकी 11th और 12th की कवरेज है, तो उसके लिए कोई बुक ऐसा चाहिए नहीं सकती. मतलब NSCGS का आप, हाँ, वी आर ट्राइंग टू मेक अ कंटेंट मोर कंसोलिडेटेड, मोर रेलेवेंट, ताकि ये दिक्कत ना आए बच्चों को, राइट. एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. सो इफ वी कैन प्रोवाइड द हार्ड कॉपीज आल्सो दिस ईयर, कि बुकलेट्स बना के बच्चों को दे दूं, बिकॉज दिस इज द मेजर कंसर्न दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि प्रिपेयर करते हैं जैसो, वो फेस करते हैं कि सर कोई किताब नहीं है जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए, NSCGS के और लिए. कैसे पढ़े बायो? आ जाओ वेदांतु पे यार, रूहानी मैम है हमारे पास, मतलब आसिफ सर इज देयर, रूहानी मैम इज देयर, एंड मोर टीचर्स आर देयर, राइट. तो आ जाओ वेदांतु में, तो राइट, बायो अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे, चिंता मत करो, टेंशन नॉट. बायो बहुत बढ़िया हो जाएगी. सिद्धार्थ, क्योंकि यार ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट, और अगर मैं अपना पर्सनल बात बताऊं, अगर मैं कोई वीडियो देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं 10 मिनट में सो जाता हूं, राइट. सो यू वर सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लैपटॉप, टीचर इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द लैपटॉप. तो कैसे मैनेज किया भैया उस ऑनलाइन का? ये जो अक्सर मैंने सुना है बच्चे कहते हुए कि ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता है, टीचर भी कहते हैं ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता है. तो कैसे उस फील को ओवरकम किया, और कैसे एग्जैक्टली वो जो टाइम होता था क्लास का, मतलब कैसे क्लास इंटरेस्टिंग बनती थी, या फिर इंटरेस्टिंग नहीं भी बनती थी, तुम फिर भी लगे रहते थे? तो क्या एक्सपीरियंस था, बस ये जानना चाहता हूँ मैं. I personally rarely attend recorded sessions because recorded classes, because recorded classes always have this feeling you're just watching someone speaking about something, so that you don't have the enthusiasm to go through the entire course. And I often sleep by the time the session is halfway. So then the live sessions are way better in my opinion, because there are several people who are interacting along with the teacher. So then when others are actually talking, asking questions or telling answers, we would spam answers, and even the quizzes and all, so then we used to draw pencil on our computers and keep, so that we know where to click our answer. So then we would spam click our answer so that we'll come first on the quiz and all. So then there's always this competitive feeling everywhere. So then when we want to compete with others, we should always be active in the session, right? So that we have to be competitive
and you want to win in a competition between other batchmates, you obviously have to like stay active and solve our questions constantly. So the point is, what he just said is, spamming is fun. I'll say. spamming is fun. So what he just told us कि भाई जब, and yes of course recorded से ज़्यादा जो इफेक्टिवनेस होती है वो लाइव सेशंस की होती है, वेयर यू कैन इंटरैक्ट. जो इसने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजे की बात कही वो ये है, राइट? सच्ची बात है, पढ़ाई बोरिंग तो होती है. एग्जैक्टली. और उस लेवल पे सब और इस लेवल की पढ़ाई, हाँ, और वो बोरिंग तो होती है. और उस टाइम पे अगर आप वीडियो देखोगे ना 10 मिनट में अंदर डेफिनेटली आप सो जाओगे. बिल्कुल. क्योंकि एवरेज वॉच टाइम मैंने देखा है कि वीडियोस का मैक्सिमम एवरेज वॉच टाइम 3 से 4 मिनट होता है. बिल्कुल. और किसी बहुत अच्छी वीडियो का 6 मिनट हो सकता है. ठीक है, पर यार ये वीडियोस नहीं है, लाइव लेक्चर्स हैं. ठीक है, और लेक्चर वही लेक्चर हैं जो आप क्लासरूम के अंदर लगाते हो. ठीक है, वैसा ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे के ऊपर आकर के भी. ठीक है, एंड यस वेदांतु इज डूइंग रियली ऑसम. मतलब अगर मैं देखूं यार, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आए हैं और मैं हार्डली किसी ऐसे एक प्लेटफॉर्म को देख पा रहा हूँ जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस पे काम करने की कोशिश कर रहा है. सब लोग टीचर को ले आए, बच्चे को ले आए और कुछ कुछ कर रहे हैं. पर वेदांतु इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म के बच्चे और टीचर का जो बॉन्ड है, जो इंटरेक्शन है, वो कुछ वैसे ही हो जाए जैसे ऑफलाइन की होती है. और एंड दे लिटरली डेडिकेटेड अ टीम फॉर दैट. एंड लिटरली आई सैल्यूट वेदांतु फॉर दिस. ऐसा नहीं क्योंकि मैंने आज वेदांतु की टी शर्ट पहन रखी है, वो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने और भी कॉम्पिटिटर्स को देखा है. ठीक है, बट येस वेदांतु इज डूइंग रियली वेल. और हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि कुछ और अच्छा होना चाहिए, कुछ फीचर ऐड करना चाहिए, तो उसका भी आप हमें सजेशंस भेज सकते हो. यू आर ऑलवेज वेलकम. ऑलवेज वेलकम. बिल्कुल, राइट? सो इट इज जस्ट दैट. तो बच्चे जितने भी हिस्सा बनने वाले इस साल के कोर्सेज का VOS के, मेक श्योर कि भाई लेक्चर तो लाइव अटेंड करो अंटिल कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो. मुझे याद है मैम, कुछ ही बच्चे थे जैसे अर्नव गर्ग हुआ, सिद्धार्थ वल्सन, रचित आहूजा, ये बच्चे रेगुलर रहे. हाँ हाँ. और बाकी बच्चे क्या करते थे, 10% लगा लिया, 20% लगा लिया. फिर वो मतलब सर हमने तो फीस और भी जगह दे रखी है, तो हम वहां जाएंगे जहां फीस दी है क्योंकि ये तो फ्री में पढ़ रहा है ना. तो ये चीजें मत करना. मतलब अगर आप करना चाहते हो इस एग्जाम को क्लियर, तो सिद्धार्थ आपके पास एग्जाम्पल है कि भाई देखो घर से भी हो सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब किसने बोला कि घर से ना हो पाएगा, तो घर से हो सकता है. डेडिकेशन, एग्जैक्टली, कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड. कमिटमेंट तो सर हर जगह चाहिए ना. कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड. और क्लासेस लगाओ, जैसे तुम ऑफलाइन में क्लासेस लगाने जाते थे वैसे डेडिकेटेड होकर के क्लासेस. अच्छा, ऐसा होता था कि सिद्धार्थ के तुम लेट करके पढ़ते थे, या फिर ऐसे कुरकुरे रख रखे हैं साइड पे, खाना वाना चल रहा है, या फिर जैसे सीरियस होकर के हम पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे? कैसे पढ़ते थे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स like when we're at home, we'll obviously have this like the home feeling. So that even in school online classes, we'll never have that the seriousness we have in offline classes. But then I used to like have dinner along with session and all. That is like a really common for me because it's usually the evening time when we have session. So then it was obviously like studying at home, to be honest, since it's online. ओके. तो क्या क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते थे, या फिर वेदांतु के अंदर एक फीचर है जिसमें आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो? क्या मोड आप प्रेफर करते थे? I initially the first half and all I used to like do notes along with this, but then I found it really hard because the teacher is going at their own pace, so that might be sometimes hard because so pace was the issue because you have to so much to cover na in the syllabus. So that feature is there कि you can download the PDF. Yes of course, but we suggest कि PDF download करने के बाद भी hand written हो. बाद notes बनाते थे? hand written. I doubt. बहुत regularly इसने बनाए होंगे. No, I did not do notes that regularly, but then at the end of the like by the other half, I felt I really regretted not doing notes. Because इसने learnings अभी बताया था do and don'ts में कि make notes. This is his learning. क्योंकि इसने, मुझे था कि शायद इसने बनाया है इसलिए ये कह रहा है, पर इसने नहीं बनाया इसलिए कह रहा है कि रिग्रेट है that he couldn't make that proper notes, otherwise he could have done much better. And revision में काफी हेल्प रहती है एंड मोमेंट. देखो यार, पढ़ने का तरीका तो आई थिंक मैम ये ना, देयर इज अ सेइंग कि अगर यहाँ इसको समझाना है ना तो तरीका यहाँ से. बिल्कुल. स्क्रिबल, राइट? लिख दो तभी कहता है. गोइंग टू स्क्रिबल ना, वो यहाँ पे एग्जैक्टली सबकॉन्शियसली फीड होता है. अच्छा सिद्धार्थ,
हाँ बोलो 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 कंटिन्यू सिद्धार्थ. By the end of the last 1 month or 1.5 months and all, most of us felt like we have not done our notes that well. So what we did was that we actually made a small Google Drive link where we would share our notes and then actually make we would split chapters and make notes so that everyone does not have everyone was lazy obviously. No one wants to do the entire thing. So then we used to split chapters and make a Google Drive. Oh, nice. So that helped. So they are making use of technology to the best. So I think, ma'am, that is a good move. Exactly. Modern problems require modern solutions. Exactly. So they are doing that. They are smart people. Yeah, no? smart people. अच्छा सिद्धार्थ, स्कूल भी होता था, वहाँ पे भी ऑनलाइन, यहाँ पे भी ऑनलाइन, कैसे मैनेज कैसे किया यार इतना ऑनलाइन? मतलब ये तो आजकल प्रॉब्लम हो गई है बच्चों को कि भाई ऑनलाइन के आगे नहीं बैठा जा रहा है. बड़ा फियर है कि आंखें स्कूल की भी है ना, वो अंदर से भूत निकलेगा, लैपटॉप से खा जाएगा. मतलब कैसे यार, कैसे किया मतलब यार ये वाली चीज? Having both school and this session online was what can I say, was a bit difficult to be honest, because in school we used to write notes alongside the class, but then now that notes became homework and then there are several other assignments. I feel like most of the people in our batch actually had the teachers allowed them to skip sessions to prepare for this, but then here we cannot do that. So then I used to pile up my assignments and I usually do them at late night. So that's why I was usually online with the late nights and all. I used to do my school assignments at late night and try to do sessions and Vedantu stuff before 12 o'clock. So basically, so it was obviously hard to manage, but then I felt like once you start something, you obviously have to end it, because especially this year, the NMTC examination was supposed to happen in November, but it happened in January. So then obviously all of us were being demotivated, and it was the one sense survival of the fittest, because our batch started with 80 students and then eventually only 40 students used to attend, and then that became about 30, then 20, and only about 15 students were regular at the last 10 of the sessions. So there's in one sense survival of the fittest. That means you always need to find a way to keep yourself motivated during the entire time. Yes, the most important is to keep yourself motivated. जैसे ने बताया बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं. अभी अप्रैल में we are starting with the batches भर के ऐसे आता है कि भाई आज ही कर देंगे NSCGS qualify. But the point is this जोश should be maintained throughout. नवंबर में एग्जाम होना था, because of COVID it happened in January, वो postpone हो गया. But still many people are motivated, and who were motivated they learned a lot. They qualified, most of them qualified, and they learned a lot. जिन्होंने बीच में छोड़ दिया, now again they are thinking कि चलो करते हैं. But the most important thing is your consistency and sincerity. देखो point है. सबकी प्रॉब्लम ना सबकी सेम होती है ना. इस बच्चे की भी वही थी, तुम्हारी भी वही है ना. तुम्हें भी भूख लगना बंद हो गई थी, तुम भी बाहर नहीं जाते थे, तुम भी नहीं खेलते थे, टीचर्स तुम्हें बहुत सारा काम देते थे, इस तरफ ऑनलाइन चल रहा है, 10-10 घंटे की सीटिंग थी, घर पे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम सेम थी. फिर ऐसा क्या हुआ कि few of you just made the difference? The reason is dedication only. भैया करने का ना एक ही तरीका होता है कि करना होता है, and there is no shortcut. ठीक है, हम भी बहुत सारे, देखो मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, पर मुझे पता है बहुत सारी चीजों में मैं भी फेल हूँ, और उसका रीजन मुझे पता है कि जब मैंने खुद को रीजन देना शुरू कर दिया ना कि इस कारण नहीं हो रहा है, वो Sir, we have that natural tendency to give excuses for not doing anything. So don't give excuse to yourself. That is it. करना है तो बस करना है, और जोश में आने के बाद जोश को सस्टेन करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है ना. तो जोश में आओगे, हाँ बिल्कुल हम भी VOS ज्वाइन करते हैं, 10 दिन बाद आधी स्ट्रेंथ, फिर उसके 10 दिन बाद मतलब 5 बच्चे, और उसके अंदर भी तुम ऑल्टरनेट ऐसे आते हो जैसे मेले में घूमने जा रहे हो. फिर नहीं क्लियर होगा. आप लिख करके ले लो, इस बच्चे की परसेंटेज जो अटेंडेंस थी वो 90% से ऊपर थी. दिस इज फॉर श्योर. ठीक है. तो अगर तुम VOS में आकर के एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो भाई इम्पोर्टेंट थिंग इज क्लासेस लगाओ, बाकी हम संभाल लेंगे. ठीक है. तो बैचेस वगैरह कब स्टार्ट हो रहे हैं वो हम अभी बता रहे हैं, अभी बैचेस का भी बता रहे हैं, एंड व्हेन यू विल बी सून कॉन्टेक्टेड.
Shrestha, you are saying कि you fill that Google form, definitely you'll be contacted to be a part of our batches. Don't worry, right? Batches कब start हो रहे हैं, सब हो रहा है. Any questions you want to ask from Sidharth? देखो हम तो करते ही रहेंगे, पूरे साल ही बात करेंगे तुमसे, आएंगे, ज्ञान देंगे, बताएंगे क्या करना है NSCGS से. तो बच्चे से पूछो जो शायद तुम ज्यादा रिलेट कर पाओ, राइट? सो वी आर द टीचर्स. तो तुम्हें लगेगा टीचर्स को तो सब आसान लगता है, टीचर्स को तो सब आता है. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मतलब So you can relate. जितना मतलब मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम्स के अंदर फेल हुआ हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सक्सेसफुल होना है. आई ऑलवेज सेज कि देयर आर 99 वेज ऑफ फेलियर एंड आई विल टेल यू दैट ओनली. कि भाई तुमने वो 99 नहीं करने हैं, वन यू विल फिगर इट आउट. मुझे नहीं पता है सक्सेस का एक तरीका क्या है, मुझे तो ये पता है 99 कौन फेल होने के क्या 99 रास्ते हैं, और हम वो बता देंगे भाई ये मत करना, तुम एक कर लेना. सो यस, एनी क्वेश्चन फॉर SV Valsan, I call it. मैं इसको वल्सन ही बोलती हूँ, like since Valsan is a good thing, है ना? Valsan, Sidharth, I don't call him, I rarely call him Sidharth in these many months or year. हाँ, वो Valsan, I call him Valsan. Yeah, Valsan is catchy. So Valsan से कुछ और पूछना चाहते हैं? Any questions? So मैथ्स का भी बुक पूछ रहे थे कोई, मैथ्स का. अच्छा, how SV motivate himself? The question is how you motivate yourself. तुम किसको देखते थे? कैसे मोटिवेशन हो जाती थी? मतलब PUBG भी बंद हो गया था, मोदी जी ने PUBG बंद कर दिया, TikTok बंद कर दिया. बताओ, how to be motivated now? इतने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बंद हो गए थे, तुमने कैसे? Question to ask to me, because I am one of those persons usually demotivated like almost all the time. But then see, एक मिनट, sorry to interrupt you, SV, sorry to interrupt you. See, this is very normal. Demotivation is a part of our life. There is nothing wrong in being demotivated. हम तैयार रहते हैं, कुछ भी नहीं हो, डीमोटिवेट हो गए. And sir, this is very normal ना, कुछ गलत भी नहीं है. अरे ह्यूमन है ये, वेव जैसे साइनोसॉइडल कभी भी चलेगा ना सब हमेशा, कि कभी आप कभी मोटिवेशन कभी डाउन, तो टेक इट नॉर्मल. बट अगला एग्जैक्टली 40,000 बच्चे एग्जाम देगा तो 300 ही मोटिवेट होगा ना, बाकी तो डीमोटिवेट ही होगा ना. एग्जैक्टली. एंड प्लीज टेक दिस डिमोटिवेशन आल्सो अ नॉर्मल थिंग इन लाइफ. आधे बच्चे हम डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं. डिमोटिवेशन के बाद वो मोटिवेशन वाला क्रेस्ट आना चाहिए. बिल्कुल, इट इज अ पार्ट. डोंट एक्सपेक्ट, ऐसा नहीं होगा कि सिद्धार्थ वल्सन एवरी अदर डे ही वाज लाइक ऑन क्लाउड 9 पूरा फुल्ली मोटिवेटेड. नहीं भाई, ये खुद कह रहे हैं द मोस्ट पेसिमिस्ट सोल ही इज. Yes, and the most demotivated person, he is kind of a person जो बहुत motivated नहीं रहता, but still he could figure it out. That is the point. Even if you are demotivated for some reason today, but you can definitely achieve it by keeping up your spirit the next day. हाँ, तो कैसे? This is life. क्या करते थे वल्सन जी? I feel like having a batch is one of the best things that helped me is to go through, because obviously you're not the only one who's like demotivated when you go through like something difficult like this. So then when you talk with other people, like they'll just try to like cheer you up as well. So then having like I usually talk with several people, so that it makes me feel better, as well as like they could also help me feel like have a little bit of josh and all. So then it was obviously like being able to talk to people, obviously. And the one thing that actually kept me through the entire path is if you start something, you obviously have to end it, because stopping it midway does not make sense. You won't get any benefit of it, right? Like, so then if you started your preparation, even if it's extended for 3 or 4 months, you should like try your level best to keep the same level of preparation and everything till the end. If you start it, you have to end it. So then you should end it with something glorious as a victory. So then you should try really hard for it. So one another question SV for you from Aditya. How many exams and Olympiads to target in a year? कि एक ईयर में कितने Olympiad एग्जाम टारगेट करने चाहिए? That is one lesson I forgot to tell. You should only target one exam at one time. But then most of us target like several people like me. Usually started with PRO and NCTS, and we used to prepare for both. And then at kind of last month we found out that it's like impossible for us to like handle both. So then most of us dropped PRO because this is the last year of attending NCTS, right? So then we want to make it worthwhile. So we dropped PRO and we started preparing. So then I feel like we should always keep one target at a time and put our best on that. But then in 1 year you should
try to cover as many as you can. Like as I said before, if you get an opportunity, you should never like fail to at least give it a try. So then you should target one exam at a time, but then try to target several small exams along the way, because like especially since it was online last year, we all wrote a lot of exams just because of the prizes, to be honest. Yeah, and then you should, but our main goal should always be only one exam at one time. Otherwise, we will not be able to handle both and will become more demotivated. So the point is कि okay, ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, but your focus should be clear कि भाई this is the exam that I should clear definitely for sure. but हाँ, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है लेते जाओ, एक को टारगेट करते जाओ. और बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बात बोली सर इसने. I am really ना amazed by the level of maturity these kids have at this age. So I am the big fan of all the kids of आजकल के. So very beautifully he said कि NACGS की तो एक एज क्राइटेरिया लिमिट है कि 2 साल ही यू कैन गिव. सो इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम ना, तो यू शुड टारगेट इट फर्स्ट, बिकॉज इसका ना वो है कंस्ट्रेंट है एक बहुत बड़ा कि जैसे थोड़ी मैथ्स ओलंपियाड में थोड़ी विंडो ओपन रहती है अपनी, है ना, कि इतनी क्लास तक दे सकते हो, +1 में +2 में भी यू कैन अप 10th में भी. उस टाइम पे आप थोड़े से मैच्योर हो चुके होते हो. एग्जैक्टली है ना. तो बट NACGS अगर आप साइंस लवर हो, आप जूनियर साइंस ओलंपियाड क्रैक करना चाहते हो, इसका बेटा 2 ही साल यू कैन गिव, राइट. और बहुत सारे बच्चों को तो 1 साल निकल जाने के बाद पता चलता है कि भाई दिस एग्जाम इज देयर एंड दे हैव द लास्ट अपॉर्चुनिटी. सो यू शुड बेटर अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. यू शुड फोकस, एक बिल्कुल क्लियर फोकस चाहिए. ये एग्जाम तो अपन फोड़ने वाले ही हैं, बाकी हम ज्ञान ले लेंगे अकॉर्डिंग टू आर energies or the time that we have, right. That is very 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 good thought. Sumale is asking again and again about math book. Math देखो इतना कोई खास मैथ या कोई बहुत हाई लेवल मैथ तो नहीं आता है. NACGS में ही आता है, INGS में तो आता भी नहीं है. बट स्टिल लेट्स हियर फ्रॉम SV ओनली कि भाई वल्सन कौन सा मतलब मैथ्स की कौन सी किताब फॉलो की थी भाई तुमने NACGS के पहले पेपर को फोड़ने के लिए? To be honest, regarding maths book, it was best to ask Arnav and all, because he's more experienced with this. So Arnav is there. Arnav, Garg, if you can answer in the chat box to help the students out for maths book. I think you are here, bache. So please help the students to know which maths book you referred or better. But any which ways, SV, you can also tell us. Yes. Because AG is your good friend. So you must be knowing what he is going to say. Yes, if people are like really interested for maths books, they should obviously try out for PRMO, right? And then I'll tell the books, like we usually don't study much for mathematics because we're preparing for PRMO as well. So then we stay to that. So then for PRMO, the books I would suggest are like MONT and like Challenge and Thrill of Pre-College Mathematics and Mathematical Circles, SLOD, and those are like really advanced books. But then it's obviously good for them to start with these books anytime in the future, so that you can perform well like by the time you finish it, because we have several years of preparation, because 8th, 9th, 10th, 11th and this 12th as well. So we have 5 years of writing the exam. So then if we start with the foundations early enough, we will obviously be able to qualify PRO and RMO in some time in our future if we consistently prepare for it. So there's some books that are like Challenge and Thrill of Pre-College of Mathematics, and then like Mathematical Circles Problem Primer. ये तो बहुत हैवी नेम, बड़े खतरनाक से नेम बोल के तुम डरा रहे हो. SV मतलब वो बताओ ना कि एक अब प्लीज, आई थिंक नाउ यू आर फ्लॉन्टिंग, राइट. You didn't do that much. I am sure. हाँ, बता दो. तुम तो लोगों को डरा रहे हो. And sir, बात है, I am very sure none of them did all these books. I know, no? They are solving puzzles every now and then on group. So please don't get scared. इतना मैथ नहीं आता है भाई NACGS में. ये गलत बोल रहा है लड़का. ये नहीं. This is not the case. इतना मैथ नहीं आता भाई NACGS में. यकीन कर ही लगे कि इन्होंने किया होगा. So he is telling from PRMO. But still, that's what people tell me to study. Okay. एक और क्वेश्चन सिद्धार्थ, मम्मी की चप्पल ने कितना हेल्प किया? Really not that, but obviously, like whenever I used to deviate a lot from like preparation, and obviously since it's online, obviously there are a lot of distractions like YouTube and all. So then obviously everyone gets distracted. So that really helps. But then my mother actually helped me to like stay, like she decided to leave me do it this time, because she understood that I was like really hard to this, because there are these some situations like when I like
like when I feel like it's very interesting, I work like really hard for it. Then I don't even care of my health. People should care of their health actually for this. But still, I'm that type of person. So then I used to like work like till about 3 o'clock like almost every day for this. And then my mother says it's best to stay out of this. And then whatever my mother used to say like do your dishes and all this, I used to wait till January 17th, then I will. So that's an excuse to do those as well, right? Okay. So मतलब पढ़ना is also an excuse to avoid household chores and help to mom. Wow, nice strategies. I told you these are the smart kids, sir. So okay. So Sumali is again asking, ma'am, please repeat what all books he said about maths. यार AG write in the chat box. Even I don't know what all books he told us. सर्कल वर्कल था ये कुछ तो भाई ग्लैमरस नाम बोले एसवी ने. AG kindly write in the comment section so that Sumalaya can get the idea. क्या मुझे इंटरव्यू पे बुलाओ फिर मैं बताऊंगा. अरे एजी को बुलाया था चैट में चैट करने आ गया आज नहीं आया नहीं धोखा. चैटिंग में बैठा तुझे बुलाया था यहाँ पे आने के लिए. चलो एनी विच वेज विल बी कॉलिंग एजी ओनली इन द नेक्स्ट सेशन है ना. सो वो बता देगा मैथ्स कहाँ पढ़ना है राइट. एंड सिद्धार्थ वल्सन व्हाट ऑल एग्जाम आर यू टारगेटिंग दिस ईयर. इस साल क्या करने वाले हो. इस साल क्या टारगेट है मतलब क्या मचाने वाले हो कहाँ पे. Like we always like ideal thing is to target one exam, but there are a lot of exams. It's really hard to focus on one. So you are in 10th, right? You are in 10th now. Yes. So सबसे पहले तो boards I guess. Yes, but then boards like I'm trying to keep boards till like that end. And Yes, like, you should. Studying like social and all for NTSC. NTSC, NTSC so is the main. Yes. It would be PR1 NTSC. Okay. Good. So And I would say senior Olympiads and then boards. Okay, good. So he has a long list to crack this year also. The aim is high, the goal is high, right? Okay, any other question? Yes, we are about to end this session. Kindly ask any questions you want to ask from SV की क्या किया कैसे किया. Yes. और कोई बच्चों क्वेश्चन है आप लोगों का you want to ask from SV? Yes, SV. I would tell people to also focus on their health while going through this, especially like since it was online last year. Because since the school is also online, this was online, we should always like make sure you do some physical work. That's something I missed out last year. But then you should always make sure like you're fit, like in all ways, like mentally, socially, so that we can like stay motivated as much as we can. So टेक केयर ऑफ हेल्थ utmost important. अब ठीक रहोगे तभी कुछ कर पाओगे. चाहे ओलंपियाड है चाहे कुछ भी है सब कुछ खत्म है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. दिस कोविड सिनेरियोज अगेन द केसेस आर स्टिल राइजिंग. सो बी वेरी केयरफुल. यस कॉशियस एंड फिजिकल एक्टिविटी. इवन इफ यू आर स्टेइंग एट होम स्कूल नहीं जा रहे हो लैपटॉप के सामने बैठो गेट सम टाइम आउट टू do some physical exercise. And I'm telling you it gives you so much positive feeling na sir. I have been doing देखो this was my New Year's resolution था सर और I am doing it. I have been doing it. I have been exercising, right? So and honestly I suggest देखो जब तक नहीं किया होता ना you can't put those thoughts. Actually नहीं आता कि करो किसी को कहने के लिए, right? So once you are doing it there is a release of hormones which are responsible for your mental happiness also. वो happiness quotient बढ़ जाता है and you are more productive in your work, right? आप एक्टिव हो जाते हैं. बिल्कुल. और सर ने मतलब धुआंधार तरीके से मतलब जिम वगैरह लगा रहे थे सर. सो हम दोनों बियॉन्ड हाँ लगा रहे हैं. अभी तो छुट्टी बना के आए हैं. सो हम दोनों भी यही सजेस्ट करेंगे जो एसपी सजेस्ट कर रहा है कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसका जरूर ध्यान दीजिए अलॉन्ग विद योर टारगेट्स इन लाइफ. जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो भाई मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. मेंटल का भी ध्यान रखो मेंटल हेल्थ का भी. During this, like when ma'am actually made the batch, like this extra ages of batch, she actually introduced us to like Dada and all, like our professor, and then he was like our like substitute for Rohan, like and like he used to help us like stay like motivated to do these things. He used to like block questions so that we feel like more motivated. So then ma'am also helped us in that way, like so that she allowed us to meet people like Dada, and also that we can be happy. So another question, if we prepare for Olympiad, should we rely only in it for, on it for school exams? No, school exams के लिए तो you should be doing your दो regular जो books होती हैं स्कूल की. एंड मुझे नहीं लगता 9 और 9-10th की कोई मतलब पढ़ने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है स्कूल वाला करिकुलम जो डिसाइड किया है. अभी सीबीएसई का मतलब है लिटरेसी बढ़ाना. बच्चे के लेवल शायद उनको लगता है कि वो बट स्टिल आई एम फीलिंग
अगर आप पुरानी बात करते थे तब वो ज्यादा भी था, अभी तो बहुत हाँ, तो है ना, कम कर दिया है, स्ट्रिक्टेड सा कर दिया है। तो आई थिंक यू शुड रियलाइज योर पोटेंशियल, यू कैन गो बियॉन्ड योर करिकुलम। गवर्नमेंट भी फ्री के मार्क्स देती है, जो चिल कर। यस, सो यू शुड गो बियॉन्ड योर करिकुलम। पहले तो स्कूल में मार्क्स लेना ही मतलब वो होता था अपने टाइम पे। तो ओके, करंट सेशन, तो अगर आपने पिछले सेशन का सिलेबस नहीं किया है तो रिकॉर्डेड देखो और फिर अगली क्लास में आओ। आदित्य, ये है क्वेश्चन का जवाब जो मैं खुद ही दे रही हूँ आपको, राइट? सो हाउ टू बैलेंस ओलंपियाड एंड स्कूल सेम टाइम? He did it. He told you to balance your time. We'll be also sharing our views on the same in the live classes in the upcoming sessions. So don't worry. So the last quote, Valsan, that you believe in, वो last एक statement होती है ना, statement for lifetime, इसमें मैं बहुत विश्वास भी करता हूँ, I believe. बिल्कुल। So your favorite quote, your statement, whatever you feel like. I would say like something like begin what you end, start like and finish something that you start with, because that's what actually kept me through. Because like if you start something, you obviously have to finish it. जिसमें मैं पर्सनली बहुत company will never be fruitful, like as much as it can. सच मतलब भाई क्या कहते हैं, एकदम गॉड वाले, गॉड लेवल के ओपी। तो ये तो मतलब एसवी ओपी रेस्ट बाय इंफिनिटी, जो शुरू किया वो खत्म करो, जो मतलब once you started, yes. तो मतलब if you are not doing it, then why to start? My simple thing is why to start? If you can't end it now, why to start then? If you can't be with us till your NSCGs, don't be a part of now, right? हाँ, तो बैच में मत आना, वाईटी पे मत आना, अगर आप एंड तक हमारे साथ नहीं है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बच्चे, right? So this is, I am feeling the most thoughtful thing to say for today, right? कि भाई, if you can't do it, if you can't complete it, why to start? Good soul. So you are an enlightened soul. Okay. So that is all. And yes, thank you so very much SV Valsan for being with us and giving your fantabulous time. Question. Giving us your precious time, right? Exactly. You have given us one hour. This opportunity. Right? So and motivating so many students out there to prepare for Junior Science Olympiad. And yes, not just Junior Olympiad school, Junior Science Olympiad or कोई भी Olympiad. It is just about how to balance your life, how to stay motivated. Exactly. जो भी इसने बातें की ना, वो किसी भी स्टूडेंट की बातें होंगी. It has nothing to do with JSO. तो हम सब कोई भी एग्जाम कुछ भी होगा ना, वो सारी बातें 100% वैलिड है. We are all sailing in the same boat, Exactly, right? और इससे बातें करने के बाद हमें भी कुछ अपने फंडामेंटल रिवाइज करने का मौका मिला, मेरे काफी राइट? यस, चलो. The thing that I learned is जो स्टार्ट के खत्म करो. Exactly. Okay. So बच्चों, thank you so much, right? And we are launching this year's batches, NSCGS 1 year, 2 year, INGS batches on 5th of April. पुरानी वीडियो मेरी NSCGS बैच लॉन्च की देख लेना, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, फॉर्म फिल कर देना, वीडियो देख लेना, कैसे हिस्सा बना है. मंडे को बैच स्टार्ट हो रहे हैं, फिर मत कहना हमने बताया नहीं. हाँ, फिर मत कहना अरे भूल के लेट. हाँ, इन्होंने बताया नहीं भाई, ये तो गलत हो गया हमारे, हम लेट हो गए, ये सब मत करना. 5th April onwards, 5th April Monday onwards, we are launching our new batches for this year and be a part. अप्रैल फूल नहीं बना रहे. हाँ, yes, and we are not making April fool of anyone भाई, literally. वो जो पुरानी वीडियो से देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म को, उसको फिल कर देना if you really want to be a part of our batches, right? Yes, so hoping with more power pack session this year, right? More fantabulous बच्चे, SV जैसे बहुत सारे बच्चे, पूरा ग्रुप जैसे इनका था, उससे भी मतलब OP. हाँ, नया फीचर लाने वाला बच्चा नहीं. And last year जो हम सब ने वर्ड सीखा, that is OP, because last year only we came to this YouTube and every online platform. और भी था मैम. IDK, हाँ, IDK और IG, I guess. IDK. So ये मैं सीख ही ना पाता. I could have missed that. मतलब मैं तो ऐसा लगा भगवान मुझे पैदा किया, अच्छी बात है, ये सीखा मैं, नहीं तो मैं IDK दुनिया से निकल जाता. मतलब बताइए ना, तो IDK क्या है, IG क्या है, OP क्या है. So thanks to all of you, all the students that who watch us on YouTube, or those who are there in our batches, right? So all these lingos we learn from you, and hopefully this year also we'll be learning many more millennial language. बहुत सारे words आएंगे. ये हर अपडेट होती है मैम, ये डिक्शनरी अपडेट होती रहती है, कॉन्टिन्यूस डिक्शनरी है. So please keep us updated also, so that हमें जनरेशन गैप वाली फील ना आए. बिल्कुल, हमें लगे ना कि हम बुड्ढे हो गए, राइट? हाँ, पता नहीं चल रहा OP क्या है. OP क्या है? OP टंडन होती थी किताब हमारे तो.
तो इनिशियली जब इन्होंने ओपी लिखना शुरू किया, मैंने कहा ओपी टंडन की मतलब केमिस्ट्री की किताब, मतलब ओपी टंडन तो मतलब ऑथर है उस किताब को, उसको क्यों याद कर रहे हैं, राइट? ब्रिंग अ फन सेशन ऑन टैग्स, बिल्कुल चलो टैग्स पे हम करेंगे। चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। विनोद, हाँ विनोद हम हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये एसवी का इंटरव्यू हो रहा है। तो दिस ऑल यू नो फन ऑफ सोशल मीडिया और डिजिटल इंडिया। सो यस, विनोद पारी सब किया हमने इस साल, सब सीखा और सब एंजॉय भी किया। होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन ऑसम ईयर अहेड विद ऑल ऑफ यू, विद ऑल द मोर यंग एनर्जी, न्यू एनर्जीज, राइट? पुरानी एनर्जीज तो साथ है ही हैं, उन्होंने छोड़ के नहीं जाना भी है। न्यू बच्चा पार्टी, राइट? और मचा देना भाई, फोड़ देना है इस बार सारे ओलंपियाड। हमने वेदांत ओलंपियाड स्कूल का ये मोटिव है, घर घर से ओलंपियाड निकलेगा। बिल्कुल, घर घर से ओलंपियाड निकलेगा, राइट? घर घर से बच्चा उठा के ले जाएंगे। कितने ओलंपियाड चलाओगे, घर घर से ओलंपियाड निकलेगा। सो दिस इज आवर मोटिव कि भाई अवेयरनेस फैलानी है जूनियर साइंस ओलंपियाड की। जो तुम्हारा भाई बहन रिश्तेदार, राइट, जिसको अगल बगल वाले आंटी का बच्चा, जो भी तुम्हें लगता है 8th 9th में, पूछो जाके आज, आर यू 2007 और 8 born? अगर आंसर हाँ है, बच्चा पकड़ के कह दो भाई जूनियर साइंस ओलंपियाड मुफ्त आओ, तैयारी करो और देश का नाम रोशन करो, राइट? यस, ओके, एनीथिंग यू वांट टू से रोहित सर? बहुत दिनों बाद रूबरू हुए आप बच्चों के। बस यही है यार कि बढ़िया पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है, खेलो कूदो मजे करो, एक ही जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती है, ठीक है, और कुछ बड़ा करके जाओ, ठीक है ना? और ऐसे मतलब टाइम वेस्ट क्यों करो? पबजी खेलना है खेलो, पर एक दिन खेल के बंद कर दो। पबजी अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, अब तुम फौजी पे हो जाओगे, ठीक है? तो इन सब को छोड़ो, आजा थोड़ा सा काम की बात करते हैं। कॉलेज में खेलेंगे ना, कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे ना से बड़े बंदे लैन पे लगा करके खेलते हैं वहाँ पे, है ना, 20-20 30-30 लोग एक साथ खेलते हैं। तो पहुँचो उस जगह पे ताकि तुम्हें खेलने का भी मजा आए, ठीक है? तो चले, बिल्कुल। एंड एनटीएससी बैच कब लॉन्च हो रहा है, कैसे लॉन्च हो रहा है, कैसे? जल्दी जो सर वो आने वाले हैं, भाई जो भी एनटीएससी स्टेज 1 वाले बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज डू वॉच दैट सेशन। हर एक ओलंपियाड का हिस्सा और बैचेस का हिस्सा बनने के लिए हमारे वीडियोस ऑलरेडी कुछ हैं, प्लीज स्क्रॉल करके ढूंढ लो, राइट, कि कौन सी वीडियो है। जो भी बैच का तुम पार्ट बनना चाहते हो, वी कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑल अबाउट द वेरियस बैचेस दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च, द ओलंपियाड कोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फॉर दिस ईयर। सो प्लीज 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 जरा VOS की नोटिफिकेशन वाला बटन दबा देना ताकि कोई भी नई वीडियो आए रिगार्डिंग एनी एग्जाम और द बैच एनरोलमेंट आप लोगों को पता हो। भाई दिस इज समथिंग यू शुड नॉट मिस। मुफ्त में है भाई, मुफ्त में है और मुफ्त रिजल्ट भी है, ठीक है, ढंग की चीज है, हेंस प्रूव्ड। सो दिस चैनल इज फॉर एकेडमिक्स। देखो बकैती मत करना, यहाँ पे आकर एकेडमिक्स का चैनल है, पढ़ने आना, एंटरटेनमेंट नहीं है, पढ़ने आना यार यहाँ पे, ना। अगर बकैती करनी होती तो सर आज हम 25-28 हजार पे नहीं होते। एग्जैक्टली, नहीं तो हम कुछ और ही कर रहे होते ना यहाँ पे, क्योंकि पढ़ने वाला क्राउड बहुत कम होता है भाई। हम टीचर है ना इस चैनल पे, शायद लास्ट ईयर हम इस लेवल पे उतरे, जूनियर लेवल पे। हाँ exactly. हमें से कोई भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो VOS का पार्ट है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जो 8th क्लास 9th क्लास इवन फॉर दैट मैटर 10th क्लास को भी पढ़ाता हो। एग्जैक्टली, हाँ, वो टीचर है जिन्होंने पिछले 11-12 साल से, 10 साल से, 8 साल से JEE और NEET 11th और 12th को ही पढ़ाया, उसी पे ध्यान दिया हमने। तो कोई थॉट लेके हम इतने जूनियर लेवल की क्लासेस में उतरे कि ओलंपियाड निकालना है तो बच्चे को पकड़ना पड़ेगा और उसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। सो ये जो हमारा थॉट है ना, उसमें आप सबका साथ चाहिए, जो आपने बुक भी दिया भी इस साल, and hope for the same support and association with all of us this year as well. Thank you so much, thank you all, right? Okay, bye guys, take care, ठीक है, कोरोना से बच के रहना, exactly, है ना, नहीं तो तुम बाहर मत जाना, नहीं तो कोरोना साथ में आ जाएगा, exactly, ये घर पे रहो, पढ़ो, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इनका नया सेशन शुरू होगा 10th वाला, 9th वाला, 8th वाला स्कूल का, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेशन, राइट? थैंक यू सो मच, से बाय एसवी बच्चों को भी बाय करो। चलो ओके, बाय गाइस, थैंक यू सो मच।